Hello friends, welcome to this very special show, a talk show with Sanjay Roshan Talwar. Sanjay ji, you are most welcome. Sanjay Thank ji, you. we all know Sanjay ji is the founder and managing trustee of Immaculate Ideal Human Foundation, as well as a producer of our films. Two films, like first was Lakshmi, The Awakening, and the second film, which the shooting has been completed, Mahalakshmi, The Evolution. So Sanjay ji, please tell us your journey with the second film, the making of the second film, how you went about it and what kind of help you got from all of us. Okay. Thank you, Prana ji. पहली बात तो ये है कि I would like to speak in my native language because I think the movies are also in Hindi, and so all my brothers and sisters, मेरे भाई बहन जितने भी हैं, वो चाहेंगे कि मैं कुछ उनकी भाषा में भी जरूर बोलूं. So I will try to make this sort of a précis in English as well as what I speak in Hindi. Firstly, I would like to thank you, the author of both the stories of Lakshmi, the Awakening, and Mahalakshmi, the Evolution. You have given us a kickstart to work on these stories of yours, and then to make them into a live film, which is a Bollywood style feature film. And for that, I have come before all of you. आप सबके सामने मैं ये प्रस्ताव लेके आया हूँ, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कि ये जो दोनों फिल्म की लेखक हैं हमारी अपर्णा गंगोपाध्याय जी, उन्होंने दोनों फिल्म्स महालक्ष्मी पथ और गृहलक्ष्मी द अवेकनिंग की कहानी लिखी है. इतनी रोमांचक है कि हम लोगों को उसको एक पूरे बड़े पर्दे के लिए ऐसी कहानी बनानी पड़ी जिससे एक बॉलीवुड स्टाइल फीचर फिल्म बन सके. तो मेरा आज का आपको ये प्रोग्राम एड्रेस करना, आप तक पहुंचाना एक संदेश आज मैं जरूरी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ये मैसेज आप उन लोगों के लिए है, खास करके जिन्होंने हमारी फिल्म के लिए सपोर्ट दिया है, चाहे उन्होंने प्रार्थना से दिया है, चाहे उन्होंने शारीरिक रूप में आके हमारे साथ जुड़ के दिया है, या उन्होंने अपने निजी जो इनकम है उसमें से कुछ सेविंग करके उन्होंने हमें डोनेशन दी है हमारे एनजीओ को. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एनजीओ 100% इंटरेस्ट टैक्स फ्री है. उसमें कोई भी नाम इंटरेस्ट ले सकते हैं, मगर वो डोनेशन जो है वो पर्पस के लिए ली जाती है, जो पर्पस हम लोगों ने यहाँ डिसाइड किया है. पहले आपने गृहलक्ष्मी द अवेकनिंग के लिए हम लोग को डोनेट किया, और अब आपने महालक्ष्मी पथ की शूटिंग करने के लिए आप लोगों ने डोनेट किया है, और साथ में प्रार्थनाएं की हैं. प्लस आप लोग में से कई लोग क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं और हमारे टीम के कोर मेंबर्स हैं जो जुड़े हैं हमारे साथ, और जिन्होंने बहुत लंबे अरसे तक 3-4 साल तक हमारा सहयोग दिया जब से कि हमने ये एनजीओ की शुरुआत की है. तो सबसे पहले मेरा तहे दिल से धन्यवाद. I am actually honoring all those of you who have supported our film Lakshmi the Awakening with your prayers, with your participation in our team of IIHF creative team for making the films, as well as those who have actually taken out their savings, hard-earned savings, and trusted us that we are working to spread the message of Shri Mataji's love and Sahaja Yoga through the medium of cinema, which will stay on the shelves of the exhibition industry forever. Because Shri Mataji ने जो काम करके दिखाया है उसको परमानेंट कैसे किया जाए एक फिल्मों के द्वारा. How do we permanentize the process of Shri Mataji's love and message, which stays in cinema forever, so that her message can be always clicked onto and watched in the form of a very interesting story. एक ऐसी रोमांचक कहानी के द्वारा वो लोग उसको वॉच करें और उससे वो आत्म साक्षात्कार लें, उससे वो अपनी जागृति लें, अपने जीवन को सुधारें और पूरे विश्व में अमन और शांति फैलाने का उनको ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मौका है.
this is that they can spread mother's love through their contribution, which stays forever in building peace in the world through the exhibition of such films. So again and again, this is a thank you to all of you who have come forward. Many of you have been donating continuously from the ever since I requested you to please send us your donations so that we could think of even shooting the film. And you came forward with such enormous donations that I was surprised that I think it was Shri Mataji's kripa. आप लोगों के through you became the medium. So आप लोगों के through Shri Mataji की कृपा वही है कि आप लोगों ने इस तरह से डोनेट किया है अपने दिल खोल के कि हम ये फीचर फिल्म गृह लक्ष्मी के बाद महालक्ष्मी पथ भी बना सकें. मगर दोनों फिल्मों में इतना अंतर आ रहा है. There is so much difference between how these films are being made. First film was experimental because हम लोग पहली बार इसको करने जा रहे थे. We were planning to do this for the first time, and in this experiment, इस कह लीजिए कि इस experiment के लिए हम लोगों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा शुरू में. और आप लोगों ने भी जिन लोगों ने फॉरवर्ड आके बहुत दिया, उसके कारण हम इसका एक छोटा सा एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए बैठे थे. और सडनली जब ये बनने लगी, we had decided to make a short film earlier from the donations that you gave us. But when we started to actually work on the front of editing and finishing, जब इसकी editing finishing में हम पहुंचे, तो हमारे जो editor हैं प्रशांत नायक जी, who the editor actually is the HOD of the editing department of Whistling Woods International, which is a large institution of acting and filmmaking. तो ये उसके प्रतिनिधि और हेड रह चुके हैं एडिटिंग के, और इनकी एडिटिंग टीम was put into full-time usage for editing our film Grah Lakshmi The Awakening. Most of the jobs were done gratis, means उन्होंने हमसे कुछ ज्यादा पैसा नहीं लिया, जबकि मार्केट में जाते तो बहुत खर्चा होना था. बहुत लाखों का खर्चा हमारा बचा है. We have been able to save lakhs of rupees with the help of them of finishing our film Grah Lakshmi. And it was the bright idea of Prashant Naik ji that don't make a short film, make a feature film, put it in the cinema theaters. इसको छोटी फिल्म ना रखते हुए इसको बड़ी फिल्म बनाइए, सिनेमा में जाए, ताकि श्री माता जी का जो संदेश है, the mother's message, reaches all over the world through her own voice, through her own videos, and a story which is woven to begin the process of telling people about Sahaja Yoga. मतलब इस कहानी सहज योग बताने का जो तरीका है, वो सिनेमा के तरीके से हम उसको सिनेमा में लेकर आए. ये उनकी इच्छा थी. उसको फिर पूरा करने के लिए हम लोग ने आप लोगों से फिर डिमांड की. We requested you again to fulfill that vision of Prashant ji to make this into a cinematic, full-fledged feature film, and वो कामयाब हुआ. That was successful, and with that, उसके साथ हम लोगों ने इसको 2019 अप्रैल में रिलीज किया all over India. And I want to thank all of you again. मैं आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए आज आपके पास आया हूँ कि आप लोगों ने बिना झिझके, without hesitation, collectives came forward to support the film because it was so difficult to market this film or sell it to any distributor. किसी भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके इस फिल्म को ले जाके सिनेमा में चढ़ाना हमारे लिए नामुमकिन था, क्योंकि वो करोड़ों की बात करते थे. They were asking for lakhs and lakhs of rupees which we could not afford. But our collective, coming from our dear Sahaji brothers and sisters from various collectives, आपके कई कलेक्टिव से खास करके उनका धन्यवाद मध्य प्रदेश में श्री ओपी गोयल जी, who gave us the start how to show this film through the medium of cinema, and Shri Rajendra Rinwa ji, who joined him, and then through both of them, इन दोनों के जरिए हम लोगों ने इस फिल्म को इंदौर के एक इतने मशहूर सिनेमा हॉल में वहां पे 48 दिन नॉन स्टॉप चलाया, जहां पे हमने देखा कि it was went houseful for all the 48 days. It went houseful,
with 400 people waiting outside to watch the film. The cinema people became so excited to see that a spiritual film on Shri Mataji was being wanted to be watched by all and everybody from the general public. And we were surprised at the way the film was received. हम लोग चकित रह गए कि इस फिल्म का रिसेप्शन कितना बढ़िया हुआ इंदौर के थिएटर्स में, और वहां पे भी हमारी जो मदद मेरी मध्य प्रदेश की कलेक्टिविटी से, वहां से हम लोग का एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई इस फिल्म को पूरे इंडिया तक ले जाने की. और हम लोग we managed to take it to all over India with the success of the showing at Indore, and then it was again showed very successfully at Bombay with the help of the Bombay collectives, and best part was that they were contributing for the hiring of the cinema, and they were taking new people for free and showing them the film, and they were getting self-realization. So Sahaj Yoga was spreading. मतलब लोग मुफ्त में ले जाकर थिएटर्स को भर भर कर और उनसे ना पैसा लेते हुए लोगों को फिल्म दिखा रहे थे, और उनको आत्म साक्षात्कार फिल्म के द्वारा लोग सिनेमा हॉल में खड़े होकर दे रहे थे. So this became a very grand feature as far as we are concerned with the success of Bombay and Indore, that it was then taken up by other states like West Bengal, and in fact all over India. पूरे हिंदुस्तान में उससे हम लोग ने कम से कम 200-250 शो सक्सेसफुली करे, और बहुत सारे हमें खबर मिली. We got news that with this we were able to open new centers of Sahaj Yoga across India. Sahaj Yoga was spreading because of the film. That encouraged us. वो आप लोगों ने जो हमारे मिल के मदद की है, I am very thankful कि आप लोगों की मदद से, with your help, we were able to even think beyond our imagination that we could make a full-fledged feature film once again, and then we could take the story of Grah Lakshmi towards a new story of Mahalakshmi Path, means actually graduating from the state of just satisfaction to that of giving, and from Grah Lakshmi state of satisfaction you go into the state of giving, and that is the evolution, which is Mahalakshmi. So this is a very clear way of taking forward our audience to understand more about Sahaj Yoga. And here इस बार हम लोगों ने इस फिल्म के द्वारा, गृह लक्ष्मी के द्वारा, जो गृह लक्ष्मी तत्व है उससे दुनिया तक पहुंचाने के लिए कि आगे चल के क्या होता है, वो ये है कि हम एक तो अपने में आत्म निर्भर होते हैं और पूरी तरह से सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्ट होते हैं, प्लस साथ साथ हम दुनिया को भी वो दे सकते हैं अपने दिल को खोल के, उनके अंदर जागरूकता डाल के, और अपने परिवारों को जोड़ के हम उनको महालक्ष्मी पथ तक ले जा सकते हैं. उस पथ पे जो हमारी सुषुम्ना का पथ है, उस पथ पे अगर आप जाएं तो आप उठ के आप पूरी विश्व में खुशियां, अमन, शांति और चैन फैला सकते हैं. तो इसको एक छोटी सी कहानी में बुना गया है महालक्ष्मी पथ में. It has been woven into a story in the new film, whereas we have tried to portray how this can happen, how you can move from the Grah Lakshmi Tattva to the Mahalakshmi Path. So it's been a very, very beautiful journey for us. हमारे लिए ये बहुत अच्छी यात्रा रही है, और इस यात्रा में हम लोगों ने आप लोगों के पास जाके जब फिर से हाथ जोड़ा कि आप सपोर्ट कीजिए, हम नई फिल्म बना रहे हैं, तो मैं हैरान हो गया कि पहली बार से 10 गुना ज्यादा. I was so surprised when I approached you for further donations and help, that almost more than 10 times you people came forward and you gave me that assurance that you are behind me. That is how मुझे आप लोगों से ये assurance मिली, ये आप लोगों से आश्वासन मिला कि आप लोग मेरे पीछे खड़े हैं, हमको आगे बनाना चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा. इसलिए फिर मैंने बॉलीवुड के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं जो फिल्में बनाते हैं बॉलीवुड की, उनकी एक इंस्टीट्यूट चलती है विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, मैं उनके पास गया और मैंने उनको कहा कि देखिए गृह लक्ष्मी ने क्या करके दिखाया है, अब हम महालक्ष्मी पथ क्यों नहीं बनाते. सो आई वेंट टू दीज पीपल ऑफ दिस इंस्टीट्यूट which actually supported our film Grah Lakshmi during edit, and I told them, why don't you come together with me and let us together make a full-fledged feature film called Mahalakshmi Path. So they all joined hands with me. उन्होंने हाथ जोड़ लिया मेरे साथ, और
मैं आपको क्या बताऊं, जिस फिल्म में शायद 10-15 करोड़ का खर्चा आ सकता था, जिस तरह की ये फिल्म अब 2.5 घंटे से ऊपर की निकल के आ रही है, लाइक वी कुड हैव स्पेंट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन lakhs and lakhs, which is now coming out to be almost 2.5 hours or more. Uh, we have actually managed to do it under a very, very small amount. And this is because we have managed to get them to blow down their charges. उनके charges हमने कम करवाए, उनको realization दिया sets पे, मतलब कमाल हो गया, ऐसा realization कि मैं हैरान हो गया। श्रीमती के जन्मदिन पे भी शूटिंग हुई, 22 दिन we shot, 22 days we shot in Bombay, then 10 days we came back and shot in Delhi, and all the time the donations kept coming in and assuring us that we can keep paying as we go ahead. So there was no real planning actually. It was a very spontaneous way to have started this project, and we could feel that Shri Mataji was with us. हमें ऐसा लगा कि एक spontaneous तरीके से ये कार्य हो रहा है, आप लोगों का support आ रहा है, हम लोग को लगा कि इसको बनाते जाओ, करते जाओ, तो स्टोरी बहुत बढ़िया डेवलप हो रही थी। और साथ में विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल के सारे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, जो एलुमनाई जिनका बन गया, जो अब काम करते हैं बाहर जाके, वो लोग आ गए, उनको बुला लिया गया, और साथ ही साथ हमारी उनका पूरा स्टाफ, उनकी जो पूरी फैकल्टी थी वो जुड़ गई हमारे साथ, और हर डिपार्टमेंट ने दिल लगा के अपना पूरा योगदान दिया कि हमारा खर्चा भी कम हो और काम भी बहुत बढ़िया हो। मींस we spend less and we get the highest quality of Bollywood filmmaking, because this institute in itself, Whistling Woods, has been producing almost 1800 students, 1800 बच्चे यहाँ से पास होके निकलते हैं, जो कि फिल्में बनाना सीखते हैं, प्रोडक्शन सीखते हैं, डायरेक्शन सीखते हैं, एडिटिंग सीखते हैं, फोटोग्राफी. So they learn all these aspects in this institute since many years. And we caught the attention of the owners of the institute, who then started to give this institute to us for free to shoot some parts of our film. And I must thank actually profusely our director, Mr. Prashant Naik ji, because he was heading as a leader of that institute. वो इस institute के बहुत बड़े leader हैं, कि उन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप, the film is in good hands, you don't worry, just shoot and we will create a magical film to show to the people about the impact of Sahaja Yoga in the life of families, and how peace and love can be spread through the message of Shri Mataji. So उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि ये श्री माता जी का जो संदेश है, वो एक हाई क्वालिटी बॉलीवुड फिल्म के द्वारा, उनके इंस्टीट्यूट की हेल्प के द्वारा, उन लोगों की लगन के द्वारा हम लोग इसको पूरा कर सकेंगे। और आपको ये जान के खुशी होगी कि आप लोगों की मदद से, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट विद योर सपोर्ट एंड विद योर हेल्प टुडे वी हैव रीच्ड 50% of the making of the film of Mahalakshmi Path, because shooting खाली 50% की होती है, shooting is only 50%. Then comes the finishing, then comes the the processing, and then in the end comes the exhibition, this clearing for vision, for visual exhibition. So these processes take almost half the time more than shooting, and it takes almost as much budget. So whatever you have given us so far, जितना भी आपने अब तक हमें दिया है इसको बनाने में, आगे चल के इतना ही काम अभी बाकी है, फिनिशिंग, प्रोसेसिंग और साउंड इफेक्ट्स देने में, और सब कुछ इसको रिलीज करने से पहले हम लोग इसको सिनेमा में लाएं। इसके लिए हमको आप लोगों से फिर से धन्यवाद के साथ साथ मदद मांगनी है कि आप लोग प्लीज हमारे को फिर से सपोर्ट कीजिए। अगले 2 महीने बहुत क्रिटिकल हैं, नेक्स्ट 2 months are really very critical. If you give us this support, we need financial support once again, to the same tune that you have given for the shoot of the film, because again we require almost 25-30 lakhs to just process the film, and then maybe some more money may be required for further finishing and releasing, which can be done in stages. So if you can come forward with आप लोग प्लीज अपना दिल खोल के, अपना सब कुछ खोल के फिर से हमारे साथ हमें हमारा सहयोग दें, ताकि हम इसको अगले 2-3 महीने में फिनिश कर दें, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के आखिर तक हम इस फिल्म को
फिनिश करके, तैयार करके आप लोग तक ले जाएंगे। कुछ रोड शोज करेंगे हम लोग पूरे हिंदुस्तान में, आप लोगों को दिखाएंगे हमने क्या बनाया है, इसके पहले कि हम इसको सिनेमा में चढ़ाएं, क्योंकि वो फिर एक नई चुनौती होगी। दैट विल बी अ न्यू चैलेंज फॉर अस टू नॉट ओनली फिनिश द फिल्म but also to show it in the cinemas, or maybe we go to the OTT platforms. We don't know. We don't know, because all this time there has been no planning. It's been like Shrimata ji says, Shrimata ji कहते हैं कि सहज योग जो है वो अपने आप ही घटित होता है, सहज, और आपको केवल शुद्ध इच्छा करनी है और जुड़ के काम करना है, प्रेम से काम करना है। कोई भी ऐसा काम हमने नहीं किया जिससे कि आपने जो पैसा हमें दिया है, जो भी आप लोगों ने हमें दिया है, उसमें कोई भी हम लोग ने कुछ ज्यादा खर्च किया हो। मतलब हर जगह बचत हुई है, बरकत हुई है श्रीमाता की कृपा से। और अगर किसी लोगों ने कमाया है फिल्म के द्वारा, वो एक्चुअली आर्टिस्ट हैं, वो जिनको श्रीमाता जी ऑलवेज प्रमोट करती थी। तो श्रीमाता जी ऑलवेज प्रमोटेड art and artists, and that is what our NGO has actually managed to achieve. We have paid all these great men who have joined us and taken their piece of income that they needed to from the outside world. They were contributing to a much better cinema, a spiritual cinema, a cinema to spread the love of Shri Mataji. So therefore, you have done a great favor to these people who have actually earned from the process of our making this film. And this is a gratitude I'm expressing on all of them who have benefited, but many of them have not given us. बहुत सारे लोगों ने इसका बेनिफिट लेने के बावजूद भी हमको हमसे कुछ नहीं लिया है, और हमारा ये अब कर्तव्य बनता है कि हम इन लोगों को भी कुछ दें, ताकि इन लोगों का इतना समय इतना लगा है और ये सहयोग में अभी अभी आए हैं, तो इनको ऐसा लगे कि हम लोग को इस्तेमाल नहीं किया गया है। श्री माता जी जैसे आप जानते हैं म्यूजिशियंस को और सबको कैसे दिल भर के देती थी, वैसा ही एक हम प्रस्ताव रखना चाह रहे हैं आपके आगे कि आप लोग जब देंगे तो इन्हीं लोगों को जाएगा जिन लोगों ने अब तक कुछ नहीं लिया है। इसलिए फिर से हाथ जोड़ के मेरा आप लोगों से ये विनती है कि आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट करें। हमारे जो अब BTW जिसे कहते हैं, बिहाइंड द सीन्स, BTS, वो हम लोग ने वीडियोस बना बना के आपको दे रहे हैं ताकि आप देख सकें कि ये फिल्म बनी कैसे है। मेरी कोशिश रहेगी कि इसी मैसेज के साथ एक छोटा था BTS ट्रेलर आपको दिखाए, जो बन गया वही देख लीजिएगा, दूसरा निकलेगा तो वो भी दे देंगे हम आपको। और आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी एक टीम हमने हायर करी हुई है इनके एडिटिंग स्टूडियो में, जहां प्रोसेसिंग चल रही है इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। एज आई टॉक टू यू द प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन and they are needing funds every day. So today, starting today, please give us whatever best you can. If you can't pay us your donations, please pray for us. Give bandhans that we succeed, or give us your time, talk to us, join us. I would say many of you have done such a great amount of donation. I would like to invite you, come join IIHF. This is not a normal trust that you see, which is spreading Sahaja Yoga, or which is being mandated to be the only trust for Sahaja Yoga, like National Trust or like LET. They are, of course, supreme in their own way as Shri Mataji's formed them. But we don't do that job. We are just creative artists. We are working for the work of art. We want to support art. We want to use our creativity we have got. हमने जो ये अपना पाया है श्री माता जी से, हमारे आत्म साक्षात्कार से, जिससे कि हमारी सृजन शक्ति या creativity has come out and blossomed. We have got creative people together and we have got this whole institute. We are hoping कि इनको हम आत्म साक्षात्कार का प्रोग्राम शुरू कर दें. Like we can start self-realization program in this institute that turns out almost 1800 students every year. आप imagine करिए, can you imagine this film Mahalakshmi Path can be so path breaking, इतना वो कार्य कर सकती है कि इन सब लोगों को आत्म साक्षात्कार की क्लास शुरू करवा दें हम इनके इंस्टीट्यूट पर। अगर ऐसा कुछ माँ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कुछ अगर आप कर दें, तो यही लोग जो कि अब क्रिएटिव फिल्म में, एक स्पिरिचुअल फिल्म में जुड़े हैं, उनका रुख इस तरफ जाए, इनकी वाइब्रेशंस फिल्म मेकिंग मेकर्स के साथ जुड़े, ताकि फिल्में ही इस तरह की बने जैसे एक परिवार बैठ के देख सके। मतलब द होल फैमिली शुड बी एबल टू वॉच ए फिल्म टुगेदर,
See the kind of films that are happening today in the OTT and the film industry. They are appalling. They are actually breaking our society with the kind of wrong things that they are showing, which are anti-culture. It is anti-human. Instead of putting people together, we are separating them. Why are wars happening? Why are all these diseases coming to us? Because God is not happy with us. And we have to appease the God within. We have to appease our Kundalini to do this job for us. And we have to tell people how this works. This is our job, all of us who have realized, who are artists. I invite all those creative artists to please come and join us at the IIHF, because this is a non-profit. We don't make any money. We only give money. We give your belief, your full participation from your pure desire to reach out and give to the world. This is what we have learned from Shri Mataji. Whatever you have got for yourself, you must not keep it for yourself. You should give it away. And through our creative work, we are trying to do a little expensive creative work, which is cinema. But if you are so many of you who are practicing Sahaja Yoga, I'm sure a small little amount coming from a huge gathering can make this possible, that this becomes a collective work. This film is not mine. I don't own this film. This film is yours. You are contributing. आप कर रहे हैं ये. आप मुझे मौका दे रहे हैं. You're trusting me for it. And I promise you, I will not fall short of this trust. But join me. Join me in my NGO. Become my trustees. If you want to come forward, tell me you want to join me. Tell me you want to contribute more into the thinking process of making films. We don't have to make such heavy, expensive films all the time. Maybe we can now start making web series on the life of Shri Mataji. I think that would be a non-stop thing that we should work on. Because now with these two films, people will know what is Sahaja Yoga. So when they know Sahaja Yoga, then they will want to know who is Shri Mataji. And that is the time we should come forward with all our efforts as a collective, as a collective effort. This is not my NGO. This is your NGO. I don't mind even stepping down from it and just supporting it from outside. All the artists, the young artists should come, join hands with me and take over this work. It's a selfless work. It's something which will fulfill you. I tell you, my life, all these 4 or 5 years that I have started this NGO and made these 2 films, I haven't completed my second film, but still I say, to the extent that I have worked for it, I have been blessed tremendously, whether it is through money, whether it is through fame, whether it is through recognition, or just the good feeling in your heart that you're pouring out your love and your creativity to the whole world. And I have learned this from Shri Mataji by being a singer, a composer, and a writer from last 40 years. 20 years of those 40 years in Sahaja Yoga have been at Shri Mataji's feet. And I have learned from her that why don't you make films which will permanently be a feature of spreading Sahaja Yoga worldwide. Even if you are gone, she used to tell me, 100 years after your death, you will come back to see your work is still alive. See, it has got a permanent shelf life. These are her words to me. I could not realize what she was saying at that time. But today I feel what we are doing with your help. Because I told Shri Mataji, I can't do this alone. She says, don't worry, I'm giving a bandhan. All the people you will meet, they will help you. Many of them will come forward, but you have to open the door and you allow them in. So my opening the door is my effort, and then it becomes effortless because Shri Mataji takes over through you. You people are the reason why this is happening. So for you, it's a great, great, big thank you to all of you. And that is all that I have to say with this message. Rest, Aparna will display on the screen how you can donate. She will probably put slides where to donate, how to donate. And please come forward and not just money, donate your thoughts, donate your love and your heart, and join us in this big fight against the evil that is happening around the world. Jai Shri Mata. Jai Shri Mataji. Also, anything you would like to ask? Yeah, one thing which I would add on, that what you said, creatively also a guru, Shri Mataji has said a guru has to be creative, because otherwise the disciples won't be attracted. So I think films is a very, its outreach is huge. It reaches the gully kuchas. So with one film, we can reach so much.
the world. We can reach the world. Yes, yes, yes. Okay. And I have come at the stage of my life where I may not have many years to live, because you see, we are all growing old. But I have this experience which I can give to the new people who come and join us. This experience I'm willing to give you. And I'm telling you, when you start doing it, you are going to enjoy it so much. You're going to love this work. And then especially because you have got Sahaja Yoga from mother, you got her love, you got her blessings, and now you have a way to share it. You have your creativity, your Swadhisthana, your Vishuddhi. You don't have to come up to the Agya level at all. Just Swadhisthana and Vishuddhi, and it comes out to your creativity from your heart. All that you've accumulated, the love in your heart, you can share with this whole world. Okay. Thank you so much for telling us about this journey. We will have more such interviews, because it's very, it's a very motivating thing. The way you say it, you really feel so motivated. ठीक है Thank you. संजय जी, Thank you. आज God के लिए bless इतना ही. everybody. जय श्री माता. Thank you. Jai Shri Mata Ji to all of you. आप सबको जय श्री माता. जिस प्रेम की लहरों से उमड़ता है दिल मेरा, जिस प्रेम की लहरों से उमड़ता है दिल मेरा, उसकी चाहत का पावन समय हर पल होता है, समय हर पल होता है, समय. शीतल, तुम इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हो? जानते हो, जब व्यक्ति के अंदर कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो उसके अंदर का लक्ष्मी तत्व महालक्ष्मी तत्व में बदल जाता है और वह व्यक्ति शांत और समाधानी बन जाता है और सबको प्रेम बांटता है. मुझे जगाता बार बार है अटूट स्नेह ये तेरा. उसी प्रेम की शक्ति से सब काम अपने आप ही हो जाते हैं. मेरे गले के लेफ्ट साइड से कुछ गर्म हवा निकल रही है. यहाँ तो हमारा सर्विकल यानी विशुद्धि चक्र होता है और इसके लेफ्ट साइड पर भाई बहन के रिश्ते की मर्यादा होती है. पर आपकी तो कोई बहन ही नहीं है. ओह, लगता है कि आपके अंदर कोई दोषी भाव है जिसकी वजह से आपको ये गर्म हवा आ रही है. डॉक्टर, 10 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं. हमारी सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, फिर भी मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिला. देखो मल्लिका, एक औरत का शरीर बहुत ही नाजुक होता है. अगर उसमें किसी भी तरह का असंतुलन आ जाता है तो उसकी प्रेगनेंसी या उसके हार्मोन्स में प्रॉब्लम आ जाती है. आजकल के लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए कुछ फीमेल्स जिम करती हैं, स्मोक करती हैं और कुछ फीमेल तो ड्रिंक भी करती हैं. और वैसे भी आजकल की लाइफ में लोगों पर इतना मेंटल प्रेशर है कि मेल हो या फीमेल दोनों ही मानसिक तनाव में रहते हैं, जिसके कारण ये परेशानी सामने आ जाती है. इसलिए हमें खुद को ध्यान के माध्यम से संतुलन में रखना चाहिए. जानती हो ना, बच्चे का पहला घर उसकी माँ की नाभि में होता है. ऐसे ये प्यार की शक्ति, इस शक्ति के कारण ही सब एक हो सकते हैं. और जब सब हम एक हो जाएंगे तो ये जो हमें अलग करने वाली उपाधियां हैं, ये सब गिर जाएंगे, सब गिर जाएंगे. कुंडलिनी के जागरण से जब आप अपने ब्रह्मरंध्र को छेद कर इस चारों तरफ फैली हुई पवित्र, शुद्ध, निर्मल प्रेम शक्ति को प्राप्त होते हैं, तो वो शक्ति ही आपको ये प्रदान करती है और आपको इसमें मजा आता है. पहले मजा आता था किसी से द्वेष करने में, अब मजा आता है प्यार करने में. तो इस प्रेम शक्ति से एक सूक्ष्म आनंद भी झरता है. उसी के कारण हम ऐसे एक साथ एक स्वर में बोलते हैं, बस प्यार का मजा ले रहे हैं, आनंद के सागर में डुबकियां लगा रहे हैं. और यही आनंद का सागर आपको अत्यंत स्वच्छ, अत्यंत निर्मल कर देता है और वो ऐसी आपको शख्सियत देता है, ऐसा व्यक्तित्व देता है कि
कि आप तो चमकते ही हैं, लेकिन आपको मिलने वाले भी चमक जाते हैं।